Welcome back to Stylish Solution channel. Today I am discuss about the how to create fixed slide bar menu using the HTML and CSS. As I like it, this is a home page. This is a slide bar menu and about. This is about page, service. This is service page, portfolio. This is portfolio page, contact. This is contact page. This is home page. Let's go. How to create as like projects. So first of all, you create one folder HTML CSS and this image you can use to store in this folder. जो भी folder image को use करना चाहते हैं उसको आप same folder में रखें ताकि उसे use करने में कोई परेशानी नहीं हो. फिर एक index.html क्रिएट करें. index.html एक फाइल क्रिएट करें. फाइल क्रिएट करने के बाद एक पॉम्पलेट HTML का लैंग्वेज हेडिंग में अपना टाइटल देख सकते हैं. टाइटल फिक्स्ड स्लाइड बार मेन्यू यूजिंग द HTML CSS. दिस इज अ टाइटल so in a as I like it. Link the style sheet relation style sheet href style css. Second file is called css used to design how to look like your website. It helps to create a dynamic stylish web pages. So link relation style sheet href style dot css. This is connected to your this file. Head is closed. Next tag is open a body tag. Next dev class. Dev section is created a section, different section. The first section is dev class slide navbar. Slide navbar in this class create a home link, sidebar link as like it. Click on the home, then open a home page, then click on about, then open a about page as like it. Click about page, service page, home page. Next dev class is content area. Dev class wrapper. Dev id home class banner. Dev class text content is to home page. This is visual in your home page section. This is here home page section. This will create is home page section. About dev id about class about area text content is to about page. This is about page as like it. Same service portfolio contact search contact page. One more dev id is created in class description or some data are entered as like it. This is a HTML section. When you replace the style sheet, then your page look like this. When CSS is added, a style dot CSS, then look like as it is. Do you know what is difference between HTML and CSS? HTML is a structure of web pages and CSS is a cascading style sheet. Style the web pages as like it. Let's see the styles. Body, font family, poppins, body, all body is a all letters are so in a these font type. The pop is
wrapper with 11,000 px, then after margin 0 order, banner dot banner uses the class, this is a banner uses banner here height, this page is a banner, first page home page is with 100% overflow hidden बैकग्राउंड कैसा इस पेज को होना चाहिए, तो एक इमेज लगाए हैं url food email डॉट jpg, बैकग्राउंड साइज कवर पूरा कवर होना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज सेंटर में होना चाहिए, दिस इज अ बैनर सेक्शन, देन अबाउट एरिया, सर्विस एरिया एंड पोर्टफोलियो एरिया, contact area, this is class, contact area, service area, this is defined in that, हाइट, टोटल हाइट, पेज हाइट कितना होना चाहिए, पेज हाइट, तो टोटल का पेज हाइट 120 VH होगा, टेक्स्ट कंटेंट H2, टेक्स्ट कंटेंट क्लासेस टेक्स्ट कंटेंट H2, सर्विस पेज, पोर्टफोलियो पेज इज हाउ टू लुक लाइक, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, पैडिंग टॉप, फॉन्ट साइज 90, मार्जिन 0, कलर टेक्स्ट शैडो लाइक मीन्स साइड से द ऑरेंज कलर, स्लाइड नंबर इज दिस सेक्शन, हाइट वेट, हाइट कितना होना चाहिए, वेट, पोजीशन इज फिक्स्ड, यू कैन यूज देन इट कैन नॉट बी चेंज, दिस इज अ फिक्स्ड स्लाइड बार सेक्शन, जेड इंडेक्स 1 टॉप 0 लेफ्ट 0, बैकग्राउंड कलर इज दिस, ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग टॉप 20 px, slide back A, then you can create a link, this is a link section is slide bar a link, padding, text transform, font size, display block, text transform अपर केस में होना चाहिए, कलर येलो होना चाहिए, स्लाइड नंबर ए, जब हम लोग एच ओवर मतलब इस पर क्लिक करने पर हमको कैसा कलर दिखना चाहिए, तो पिंक, कंटेंट एरिया कैसा दिखना चाहिए, मार्जिन लेफ्ट इतना, पैडिंग, कंटेंट एरिया व्हाट इज दिस कंटेंट एरिया, दिस इज अ टोटल ऑल आर कंटेंट एरिया, टोटल कितना कैसा दिखना चाहिए, तो उससे डिफाइन किया गया है। अब देखिए सबका अलग अलग एक आईडी था, देखिए आईडी होम, आईडी अबाउट, आईडी सर्विस, तो सबका वो आईडी दिया गया है कि स्पेसिफिक कलर को डिफाइन किया जाए, फर्स्ट है येलो, अबाउट फेस कैसा है, येलो, देखिए अबाउट सेक्शन में क्लिक कीजिए, अबाउट सेक्शन येलो, इस टाइप का कलर आपको दिखेगा, सर्विस पेज में है, सर्विस पोर्टफोलियो, तो स्पेसिफिक कलर डिफाइन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया था, डिस्क्रिप्शन सेक्शन, कॉन्टैक्ट में हम लोग डिस्क्रिप्शन दिए थे कॉन्टैक्ट के बारे में, तो इस सेक्शन को कैसा दिखना चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कलर वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज लार्जर, टैग साइड हो हल्का रेड होना चाहिए, और HTML टोटल पेज कैसा चलना चाहिए, स्मूथ, स्क्रॉल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्मूथ, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, जैसे आई लाइक इट। तो माय फाइनल प्रोजेक्ट इज रेडी, when you click home, this is home page, about section, service section, portfolio section, contact section, let's contact section, our channel name is Stylish Solution, subscribe, like, comment for more videos. In this channel, tech channel, you will learn web development, MS Excel, Word, PowerPoint, C++ programming, Java programming, tech related video. Contact me kumarbittu5705@gmail.com. This is my phone number. Thanks for watching video. और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, आपको कैसा वीडियो चाहिए, वीडियो कैसा लगा।